गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा जूलोजी ऑनर्स जो मैंने नहीं बीएससी सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर 4 यूनिट 4 जोटा कि आम लास्ट आज क्लास होची यूनिट 4 होची लास्ट। तो या सहित तुम टोटाल जो आमर जो यूनिट आमर जो कोर पेपर 4 थिला सेटा संपूर्ण भाव में कंप्लीट हो गला। जोटा आमर सेल बायोलॉजी अच्छी सेटा संपूर्ण भाव में कंप्लीट हो गला। तो तुमको वीडियो निश्चय पसंद आसीथिबो। जो मन को वीडियो पसंद आसीबो निश्चय लाइक और शेयर करिवो, सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करिवो। एवं जो माने भी पीजीटी पई प्रिपरेशन करूछंती सेमान को भी सिलेबस रे ई सेल सिग्नलिंग अछि। तो एटा सेमान को पई भी बहुत वाइटल हे पारे। आउ सीपेट भी जो माने प्रिपरेशन करूछंती सेमान को पई भी एटा बहुत इंपोर्टेंट। तो मु डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे देइछि, तो माने जे कि सेठारु प्रीवियस क्लास गुडा को भी देखि पारो। तो देखिए GPCR एंड रोल ऑफ सेकेंड मेसेंजर कौन ता विषय में जानिबा आज क्लास रे जो सेल सिग्नलिंग रो आसी है। तो देखो द प्रोसेस बाय व्हिच सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर मेसेंजर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। ताले तुम मान को आइडिया आसीगला जे सेल सिग्नलिंग माने कोन, जेतेबेले दुई रु अधिक सेल मान को भितर कम्युनिकेट होई थाए थ्रू कोन जोड़ा होचे हमरो एक्स्ट्रा सेलुलर मेसेंजर मॉलिक्यूल द्वारा है ताहले ताको आमे सेल सिग्नलिंग कहि परिबा। तो एई जो सेल सिग्नलिंग अछि बेसिकली तीन प्रकार, गोटे अछि ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, गोटे अछि पैराक्राइन और गोटे अछि एंडोक्राइन। तो आमे गोटे पर गोटे देखिबा। ऑटोक्राइन कोन देखो, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग होची देखो द सेल प्रोड्यूसिंग द मेसेंजर एक्सप्रेस receptor on its surface as well as which can respond to the messenger. Therefore the cell can release the message either stimulates or inhibits है। तो बेसिकली जो सेल प्रोड्यूस करता मेसेज एक्सप्रेस रिसेप्टर ऑन इट्स सरफेस है यार निजर सरफेस रे से जो रिसेप्टर द्वारा रिसेप्टर को से एक्सप्रेस करता है एवं आउ मध्य कैन रेस्पोंड टू दैट मेसेंजर आउ मध्य से जो मेसेज आसबो से मेसेज को से निजे ही रेस्पॉन्स करिथाय है। तेणु आमे जदि कहि परिबा द सेल दैट रिलीज द मेसेज ईदर स्टिमुलेट और इनहिबिट देम। तो या तो फिर सेटो से स्टिमुलेट करि पारे मेसेज को किंबा से इनहिबिशन भी करि पारे है। ता पाखरे दीटा को कैपेसिटी अछि। सेमति पैराक्राइन सिग्नलिंग कोन द सीक्रेटेड मेसेंजर मॉलिक्यूल ट्रैवल ओनली शॉर्ट डिस्टेंस अल्प डिस्टेंस में थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू द नियर बाय सेल है। ता माने अल्प दूर थिबा अन्य गोटे सेल बा नियर बाय सेल पाकू बा शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करिकी जो मेसेंजर मॉलिक्यूल जाई थाए ताको आमे कहि परिबा पैराक्राइन सिग्नलिंग है। इन पैराक्राइन सिग्नलिंग द मेसेंजर मॉलिक्यूल सीक्रेटेड ट्रैवल ओनली फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखि तो शॉर्ट डिस्टेंस अल्प दूर पर्यंत से माने गति करि पारंती। अच्छा तापर देखिबा हमें एंडोक्राइन कोन देखो। तो एंडोक्राइन होची द सीक्रेटेड मेसेंजर मॉलिक्यूल रीच द टारगेट सेल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम अर्थात ब्लड द्वारा से तार टारगेट सेल को पहुंची थाए। ठीक अच्छी। तो एंडोक्राइन मेसेंजर आर ऑल्सो नोन एज हार्मोन ताको आम हार्मोन भी कहू है। एंड दे एक्सक्लूसिवली एक्ट ऑन द टारगेट सेल सिचुएटेड एट डिस्टेंस प्लेस इन द बॉडी। अर्थात जदि एटा होचे आम हार्मोन तो आम समस्त जानिचु हार्मोन जोटा सिक्रेशन होता है तार टारगेट सेल को से पहुँचे तेणु से टारगेट सेलटा ता दूर रे थाउ बा पाखरे थाउ से तार कौन से लेना देना नहीं से तार ठीक ता टारगेट सेल को थ्रू ब्लड स्ट्रीम रे से पहुँची थाए। तो यहाँ हूँ एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ आम देख बेसिकली देख ये जगह आम देखिपर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मान कर देख ओन सेल रे से तार निजे सरफेस रे तार मेसेज को देला और निजे ही ताको रिसीव कला। ठीक अच्छे। तो आउ देख ये देख पैराक्राइन देख शॉर्ट डिस्टेंस रे से ट्रैवल करिकिना से तार सिग्नल को पहुँचेबो। आउ देख एंडोक्राइन सिग्नलिंग देख ब्लड स्ट्रीम थ्रो रे गोटे जगह मन कर ये बाहला सिग्नल ब्लड स्ट्रीम थ्रो रे आउ गोटे डिस्टेंस रे थिबा आउ गोटे सेल पाखु से तार मेसेज को पहुँचेला। तो यहाँ हूँ भितर डिफरेंस। तब देखो लिगैंड टारगेट सेल एंड रिसेप्टर कौन। तो देखो सेल सिग्नलिंग
is started by the release of messenger molecule also known as ligand. ताको messenger molecule को otherwise ligand वाले कहा जाए by a cell that is involved in the sending message to the target cell. जार काम कौन है जे कि इनवल्व थे कौन जो थे कि सेंडिंग मेसेज से कौन से मेसेज को पठाए तार कौटी पठाए टारगेट सेल को पठाए है बाय बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर आउ से कौन करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर सहित निजक बाइंड करना जाए ताने कौन आम बुझे सेल सिग्नालिंग इज स्टार्टिंग बाय रिलीज ऑफ मेसेंजर मोलिक्यूल है मेसेंजर मोलिक्यूल को से रिलीज करिवो एई मेसेंजर मोलिक्यूल को लिगैंड बोली कहा जाए एवं बाय ए सेल दैट इज इनवॉल्व इन सेंडिंग मेसेज टू द टारगेट सेल तो जो सेल को से मन कर से तार मेसेज को पहुँचेबार अच्छी से सेल को आम टारगेट सेल बोली कहबा एवं बाइंड करिथाय गोटे स्पेसिफिक रिसेप्टर सहित ठीक अच्छे अच्छा लिगैंड इज ए मेसेंजर मोलिक्यूल दैट इज बाइंड टू द रिसेप्टर इंक्लूड स्टेरॉइड एंड न्यूरोट्रांसमीटर है स्मॉल सोल्यूबल प्रोटीन हॉर्मोन एंड ह्यूज ग्लाइकोप्रोटीन तो ये जो मेसेंजर मोलिक्यूल है जे कि जो रिसेप्टर मान सहित बाइंड करें तो ये रिसेप्टर मोलिक्यूल मान भर किए किए आसीपे स्टेरॉइड भी आसीपे न्यूरोट्रांसमीटर भी आसीपे स्मॉल हो बा सोल्यूबल प्रोटीन हॉर्मोन हो कि ह्यूज ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है सेल टेंड टू रेस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक एक्स्ट्रासेलुलर मैसेज only if they express receptor that exclusively recognized and bind to the messenger molecule. The cells that harbor those specific receptor are called target cell है जो सेल को से तार पहुँचेबार अच्छे ताको से टारगेट सेल बोली कहे द मोस्ट स्टडी रिसेप्टर आर तो ताको आम कौन कहबा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जोटा GPCR आर अच्छे रिसेप्टर टाइरोसिन काइनेज जोटा RTK बोली आम कहबा तो जो मानकर ऑलरेडी जो मैंने BSc सेकेंड सेमिस्टर रे पढ़ुछ GPCR तांकर सिलेबस रे मध्य अच्छी ठीक अच्छी तो आम GPCR मध्य पढ़ा है तो देख तो GPCR बा जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर फैमिली इज नेम्ड सो बिकॉज लिगैंड बाइंड कॉज ऑफ change in receptor conformation that activate a particular G protein है तो बेसिकली एक्टिवेट किए करे G प्रोटीन को से एक्टिवेट करता है इट इज ए abbreviation of guanine न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन तो मन रखी था यहाँ हूँ कौन गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड को जो बाइंडिंग करते जो प्रोटीन सेटा है जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर दैट रिमार्केबल इन दैट दे all have similar structure yet different significantly in their amino acid sequence है तो बेसिकली जी प्रोटीन जो रिसेप्टर अच्छी एक्चुअली एटा हूँ कौन से मैंने सिमिलर स्ट्रक्चर हो पारती किंतु तांकर जो एमिनो एसिड जो सीक्वेंस अच्छी सेटा डिफरेंट हो पारे इन ईच केस द रिसेप्टर प्रोटीन फॉर्म 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलाइस connected by alternating cytosolic or extracellular loops. The N terminus of the protein is exposed to the extracellular fluid which the C terminus reside in the cytosol. अच्छा द एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन ऑफ ईच जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर हाज यूनिक मेसेंजर बाइंडिंग साइट बुझिपाल तो प्रत्येक जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर गोटे यूनिक मेसेंजर बाइंडिंग साइट अच्छी एंड साइटोसोलिक लूप एलाउ द रिसेप्टर टू इंटरैक्ट विथ ओनली सर्टेन टाइप ऑफ जी प्रोटीन आई जो साइटोसोलिक लूप अच्छी ये से जो तार जो सर्टेन जो प्रत्येक पाई तो अलग अलग यूनिक मेसेंजर बाइंडिंग साइट अच्छी आ प्रत्येक मेसेंजर साइट बाइंड को से तार सर्टेन जो तार जो अच्छी ता सेठी ही जाइए रिसेप्टर कौन करे इंटरैक्ट करने एलाउ करे है अच्छा GPCR सुपर फैमिली मेंबर आर ऑल्सो नोन एज 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जो 7 TM रिसेप्टर बोली आम ताको कहि परिबा आज दे आर कंपोस्ट ऑफ 7 ट्रांसमेम्बर हेलाइस है तो ये जगह तार स्ट्रक्चर देछि स्ट्रक्चर ऑफ GPCR है विथ इफेक्टर जो जगह देखो अल्फा बीटा गामा
तीन प्रकार अच्छी। तो ये जगह आम देखिपार रिसेप्टर, यहाँ हूँ आम रिसेप्टर साइड, ये देख लिगेज बोली कहवा है एवं से एमिनो एसिड सिक्वेन्स से बाइंड होना से तार जीव जो जगह इफेक्ट कला कौन इंट्रासेलुलर सेकेंड मेसेंजर। तब देख जी प्रोटीन एक्ट very much like molecular कौन switch whose on or off state depend on the whether the G protein is bound to GTP जोटा guanine triphosphate और GDP जोटा guanine diphosphate है तामाने कौन G protein act very much like molecular switch whose on or off state depend on the whether the G protein is bound to अर्थात तार जो ऑन हम कि ऑफ हम दीटा जिनस डिपेंड करे गोटे हूँ गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट कि गुआनाइन डाइफॉस्फेट। देयर आर टू डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ जी प्रोटीन द लार्ज हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन एंड ए स्मॉल मोनोमेरिक जी प्रोटीन। तो 2 प्रकार जी प्रोटीन अच्छी। द लार्ज हेटेरो ट्राइमेरिक G protein contain 3 different subunit called जोटा हूँ आम कौन G alpha कि G beta कि G gamma ताको कहपा जोटा मुझे मझे जो डायग्राम रे देखी है सेमती हेटेरो ट्राइमेरिक G protein mediate signal transduction through G protein linked receptor। the small monomeric G protein include only कौन RS है तार देखो जी प्रोटीन हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर है तार सेम बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी एंड मोड ऑफ एक्टिवेशन। द 3 सब यूनिट जोटा हूँ आम जानी जी प्रोटीन अल्फा बीटा गामा हेटेरो ट्राइमर ताको कह जाए जी अल्फा बीटा गामा हेटेरो ट्राइमर है यही प्रकार लिखा जाए है। तो जो देख जी प्रोटीन अल्फा जो देखा द लार्जेस्ट बाइंड टू द गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड तार कौन ये मन रखी अल्फा हूँ लार्जेस्ट है मन रखी अल्फा हूँ लार्जेस्ट बाइंड टू द गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड है एंड अल्फा कौन करे बाइंड टू जीटीपी आउ से जीटीपी को बाइंड करे इट डिटाच फ्रॉम द बीटा एंड गामा ये कौन करे ये जो अल्फाटा ये बीटा और गामा ठारू कौन हो जाए डिटाच हो जाए अलग हो जाए। अच्छा बीटा और गामा कौन सब यूनिट ऑन द अदर हैंड आर परमानेंटली बाउंड टुगेदर एमान कौन परमानेंट एमाने डिटाच होती ये दी जन बीटा और गामा से दु जन सहित बाइंड होगी ही रहती किंतु गामा जे अल्फा से तार डिटाच हो जाए है। सम जी प्रोटीन सच एज GS एक्ट as stimulator on the signal transduction hence S for stimulatory है तेणु ताको S बोली कह जाए स्टिमुलेट जेहेतु करे ताको S बोली कह जाए। अदर सच ए GI एक्ट एज इनिबिट है तेणु ताको I बोली ना गला दिगला जेहेतु ये कौन जी I for इनिबिटरी है। तब देखो when messenger bind to the G protein linked receptor on the surface of the cell, the change in the conformation of the receptor cause a G protein to associate with the receptor, which in turn cause of G alpha subunit to release its bound GDP। अर्थात कौन है जिते बड़े ये जो when messenger bind to G protein linked receptor on the surface of the cell तो सही समय कौन हुए चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ रिसेप्टर कॉज ए जी प्रोटीन टू एसोसिएट विथ द रिसेप्टर है इन व्हिच टर्न कॉज जी अल्फा सब यूनिट टू रिलीज इट्स बाउंड जीडीपी। द जी अल्फा व्हेन एक्वायर ए न्यू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी एंड डिटाच फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स जो से आउ गोटे नुआ जीटीपी पाईगला है से कौन हो तार जो पुना जो कॉम्प्लेक्स था से डिटाच हो अलग हो डिपेंडिंग ऑन द जी प्रोटीन एंड ए सेल टाइप इधर द फ्री जीटीपी जी अल्फा सब यूनिट और जी बीटा गामा कॉम्प्लेक्स दैट जोटा कैन देन इनिशिएट सिग्नल ट्रांसडक्शन इवेंट इन द सेल है। ईच पोर्शन ऑफ द जी प्रोटीन एक्सर्ट इट्स कौन इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द पर्टिकुलर एंजाइम है पर्टिकुलर एंजाइम सहित से बाइंड कर अदर प्रोटीन इन द सेल। इन सम केसेस बोथ
GTP, G alpha and G beta gamma subunit simultaneously regulate different process in the cytosol. ତାଙ୍କର process ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। तो स्ट्रक्चर को तुम्हें निजे स्क्रीनशॉट नहीं लिखिपार है। तब देखा जदि आम देखा द एक्टिविटी ऑफ द जी प्रोटीन persist only as long as G alpha subunit is bound to GTP। तो जी प्रोटीन रो एक्टिविटी केते पर्यंत रहइबो जेते पर्यंत GTP सहित अल्फा सब यूनिट बाउंड होगी रहइबो एंड अल्फा और बीटा गामा सब यूनिट रिमेन सेपरेटेड है। ए तो सेपरेट आमे जानिचु अल्फाटा सब बीटा और गामा रू सेपरेट होता है बिकॉज ऑफ अल्फा सब यूनिट कैटालाइज GTP हाइड्रोलिसिस इट रिमेन एक्टिव है। जेहेतु ये कैटालाइज करे तेणु ये एक्टिव रहे ओनली अंटिल द हाइड्रोलाइज इट्स एसोसिएटेड GTP टू GDP है एट व्हिच टाइम इट रीएसोसिएट विथ बीटा गामा। तो जेते पर्यंत हाइड्रोलाइज न होइकिना GTP रु GDP को कन्वर्ट न होइछि सेते पर्यंत ए अल्फा सब यूनिट कौन होता है ता सहित आटाच होगी रही है तापर पुणी थर ये बीटा गामा सहित आटाच होता है। दिस फीचर अलाउ द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे टू शट डाउन व्हेन द मैसेंजर इज यूटिलाइज है। सम अल्फा प्रोटीन आर वेरी inefficient at catalyzing GTP hydrolysis. However, their efficiency is dramatically improved by regulator of G protein signaling protein that is RGS है। When RGS protein bind alpha they stimulate GTP hydrolysis है। Such GTPase activities protein है are important regulator of G protein function as we will see later in case of the RS protein। तब देखो the large number of different G protein provide for a diversity of G protein mediate signal transduction event है। The most important and wider spread G protein mediate signal transduction event are release of formation of second messenger। तो आम जगह second messenger रोल कौन पढ़ा एटा मध्य तुम BSc सेकेंड सेमिस्टर अच्छी। तो देख cyclic AMP is a second messenger whose production is regulated by some G protein है। Adenylyl cyclase is anchored in the plasma membrane है with its catalytic portion protruding it into the cytosol। In a inactive state, the alpha, beta, gamma subunit are present at a complex with GDP bound to the alpha subunit when a ligand L bind the receptor। एटा मैं आगु जानिछु जे कौन करि थाए जे जो हमर जो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट अछि हला कॉम्प्लेक्स जोटा प्रेजेंट थाए से कौन करे बाउंड हो जाए कौन सहित अल्फा यूनिटा बाउंड होता है GDP सहित किंतु लिगांड जे अच्छे से सब रिसेप्टर सहित बाउंड होकर रही है बाइंड होना रहे एटा आम प्रीवियसली पढ़ले है। इट बाइंड एंड एक्टिवेट GS प्रोटीन। तो फास्ट देखो आम किसी पॉइंट देखा व्हेन द रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय लिगैंड बाइंडिंग द रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विथ GS प्रोटीन causing the displacement of GDP by GTP and the dissociation of the GS जोटा अल्फा GTP complex है। तो आप देखो सेकेंड देखा जदि GTP GS अल्फा complex then bind to the activate membrane bound adenylyl cyclase which synthesize cAMP। तापर देखो एक्टिवेशन एंड
When the ligand leave the receptor, the GTP is hydrolyzed to the GDP by the GTPase activity, and the GS alpha subunit and the GS alpha dissociate from the adenylyl cyclase. তারপর দেখো adenylyl cyclase then revert to the inactive form. The GS alpha reassociate with the GS beta gamma complex है and देखो cAMP molecule in the cytosol and hydrolyzed to AMP by the phosphodiesterase जोटा कि ये जगह देखो डिटेल स्ट्रक्चर देती है तुमको मु तुम जो टेलीग्राम रे मु लिंकटा टेलीग्राम रे यार PDF को देदेवि से तुम्हें यार स्ट्रक्चर करदेव है ये देख आल्फा बीटा गामा तो एका संगे मिसिक रहा जी प्रोटीन इनएक्टिव स्टेज रे अच्छी GDP ये जगह देख आल्फाटा डिटाच है बीटा गामा सहित बुझेगा तो आउ देख एपटे देख लिगांड कौन कला रिसेप्टर सहित से बाइंड कला ठीक अच्छे ये जगह देख ये लिगांड कौन कला तार रिसेप्टर सहित बाइंड कला नेक्स्ट रे देख स्टेप रे ये जगह देख तापर देख ये रिसेप्टर रे बीटा गामा लगिला आल्फा आसिकी एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट रे आसिकिना बाइंड करबा को लगिला। थर्ड नंबर देख साइक्लिन AMP रे हाइड्रोलाइज हला ठीक अछि फॉस्फोडाइएस्टरेज रो प्रेजेंस रे AMP रिलीज कला हला पुणी थोड़े देख से आसिक आल्फा बीटा गामा से एक अन्य सहित आटाच हो गले तो स्ट्रक्चरटा को तुमको पठेदेवी है तो जी प्रोटीन रेस्पॉन्स क्विकली to change the ligand concentration because they remain active for only a short time before the G alpha subunit hydrolyze its bound GTP and convert the inactive stage है once the G protein becomes inactivated the adenylyl cyclase cease to the make of cAMP. However, cAMP level would still remain elevated in the cell if not for enzyme phosphodiesterase which degrade cAMP. This further ensures that the signal transduction pathway will shut down promptly when the concentration of the ligand outside of the cell decline. तब देखो cAMP is important for many cellular events. An increase in cAMP concentration can produce different effect in the different cell. When cAMP is elevated in the skeletal muscles and liver cell, the breakdown of the glycogen is stimulated. In cardiac muscle, the elevation of the cAMP strengthens heart concentration. However, the smooth muscle concentration is inhibited. In blood platelet, the elevation of the cAMP inhibit their mobilization during the blood clotting and the intestinal epithelial cell. It causes the secretion of the salt water into the lumen and gut. एटा होची तार सब फंक्शन है एटा होची तार फंक्शन है तो ये थिला तुमरो सेल सिग्नलिंग आम दुईटा पढ़े आशा करूँ तुमको वीडियो पसंद आसी आज तो ये नेक्स्ट क्लास नुआ चैप्टर पढ़ा थैंक यू।